meeting. I would not say this is a monthly meeting. I'll not say that because this is not a regular meeting which we have on first of every month. This is something special. Let me start with, as I always do, with the success and victory of the last month. And we had a good May. The best part is since January we are growing on last year every month. That's the beauty. Leaders are consistent, business is consistent. We got a new presidential elite, Winnie Holy. She is from Yatuli ma'am's team. So congratulations, Yatuli ma'am there. Congratulations, Winnie Holy, for qualifying new presidential elite. So yeah, it was a wonderful month. The May was awesome. And sorry, April was awesome. I'm already in May. I'm already feeling the vibe of convention. So let's move to this month and uh, forward. This meeting is very special. I know we call it a Four Life family, and there are many announcements which are directly related to you all, whether you are a leader, whether you are an associate, whether you are a diamond, you are a presidential, bronze, silver, gold, it doesn't matter. But there are many announcements which are directly related to you, and you will connect to these announcements. There are few announcements already done in convention. Many of you know about it, but there are many India specific announcements, right? So I am very excited. I am very much thrilled, I would say, rather. I know that this is going to be our year. This is going to be the year for Four Life family, and there are many people who would understand the power of Four Life family now. I will not take much of your time. I will hand over this meeting to Shishir sir, right, to give us the gifts before Christmas. So, sir, over to you. Thank you, Vijay, and good morning to everyone. I just respect all of you because every time I come in these meetings, starting the meeting dot at 11, it means a lot, right? All of us have been in so many meetings, so many calls, but I seldom see meetings starting on time. और हमारी मीटिंग हमेशा डॉट 11 o'clock शुरू होती है और तब तक हमारे पास एज आई सी नाउ देर आर मोर देन 130 people in this call. This is awesome and this is exciting for me because, as Vijay said, today's meeting is slightly different than what we have been doing. So, दो चीजें मैं आपको बोलूंगा. Number one, be patient with this call because this is going to last for anywhere between 90 minutes to 120 minutes. Second, as Vijay said, that there is something for all of you there. So please keep taking the notes of the points that will impact your business, right? Because there are so many announcements that you'll not be able to remember all of them, and that much I can assure you, right? And with that, let me share my screen and get on with the presentation. Uh, am I? Is the presentation visible, Vijay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Great. sir. You can see the presentation. So, good morning once again, everyone. We are calling this meeting Elevate 24, right? As you know, Elevate means moving up a notch, taking things higher from where they are, moving from goodness to greatness. Right? We have been having an excellent run, right? And in this meeting, I'll try and speak in Hindi as well for some of our audience who are comfortable with Hindi. सो इस मीटिंग को हम लोग एलिवेट 24 बोल रहे हैं और एलिवेट का मतलब हमेशा होता है कि आप जहां पर हैं उससे ऊपर आप कैसे जा सकते हैं, राइट? हम बहुत हैप्पी स्पेस में हैं. वी आर ग्रोइंग मंथ ऑन मंथ. वी आर गेटिंग न्यू क्वालिफायर्स. आर I think when I look at productivity, all of you are doing more business than you were doing earlier. New people are joining the business. So we are in a very, very happy space, right? But the question is, can we move from this goodness to something called a greatness? And when I was looking at this, I could only get to one person, and that's Jim Collins. And I tried to look at what is he talking about greatness, right? He says greatness is not a function of circumstance.
सो आप तब बड़े नहीं होते हैं जब circumstances आपके फेवर में होते हैं, because a lot of times circumstances are not in favor of you, and still you have that opportunity to elevate yourself to next level. So if it is not circumstances, what is it that drives this growth? What will help us elevate ourselves to next level? And that is where he says greatness, it turns out, is largely a matter of conscious choice and discipline. राइट सो ग्रेटनेस इससे नहीं आता है कि जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं। ग्रेटनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी सिर्फ दो चीजें हैं। नंबर एक, क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड नंबर दो, आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग टुडेज प्रेजेंटेशन, because what we are saying is at For Life India, we have chosen to soar higher. We are already high. When I look at I mean the kind of success we have been getting in past couple of years, and for all these years that we are in India, we definitely are in a very good position, but we have chosen to soar higher. How can we multiply our business? How can we be a formidable force in this country? And once we have taken that decision, the next step that Jim Collins talked about was, what are you doing about it? So choosing to soar higher can be my dream. But unless I decide to do something, I don't think I'll be able to move higher. And when I say I'm looking at For Life India from a policy perspective, I'm looking at For Life India from a support perspective. So if I've chosen to soar higher, if I've chosen that, okay, let us multiply our business, what are the things that we have in our control that we can impact, irrespective of the circumstances? And I think we picked up on these four levers. We know that if we are chosen to soar higher, what we'll need to follow is think. I mean, we went back to the drawing board and we said, okay, what are the areas which will help us multiply our business? And when we look at areas, I think we have areas in products, we have a great compensation plan. Can we improve on training and education? How are our trips and incentives working for us? So these were the four areas where we thought, let us scan, let us see where we stand, and is there anything that requires some kind of a change? Because unless we decide to change, we will not grow. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हम लोग 15 साल 20 साल से इस बिजनेस में हैं, चाहे फोर लाइफ में या डायरेक्ट सेलिंग में, और हमें लगने लगता है कि हमें सब कुछ आता है, right? And the moment you start feeling that you know how to run your business, you know everything about the business, that is the time when you stop growing at a pace that you want. We don't want to do that. We want to learn more. We want to try newer things, and we want to give you better support than we have done ever. So let me take you to the first lever, and that is products. I think when I talk about products, we have a great story, right? We have products which are backed by research, which are backed by science. And each product that we have is talking about the science we have, the science of transfer factor. Globally, we have more than 80 plus patents. And that should give us the confidence that जब हम ये बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स स्पेशल हैं, हमारे प्रोडक्ट्स का यूएसपी, हमारे प्रोडक्ट्स का एक स्टोरी लाइन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Then last year, what we have done is we have started focusing on our targeted segment, because with the core of transfer factor, we had transfer factor plus, Rioveda, that are the core products. But then we thought, as India is expanding, the need for immunity is expanding into targeted segment. There are people with special needs who need a product that can take care of that need, and a product will be better if it has a transfer factor link. So we have started launching products since last year where we are focusing on the targeted segment. We don't want to have a lot of products, but every product that we want to launch has to be a unique, science-backed, patented product. Then we looked at
how can we increase profitability for our direct sellers, profitability of our leaders. And that's when you see the our new pricing policy that has been launched, but it gets total impact within the next 3 4 months. We have done two things, and that is where we have changed. Number one, we have raised the LPs so that when somebody is selling one pack of a product, his profitability goes up in terms of the compensation plan. What we have also done is we are trying to increase the retail margin from current 11% to 20%. So we have only changed price for Renewo as of now, and you see that the MRP has is 20% more than what is your price. So you get a clear-cut advantage of 20% as retail margin. And we're also looking at, is are these products enough, right? And this is something which is interesting that we came about, and it was also shared in the convention, right? We have an author, Brett Blake. He has more than 20 years of experience in direct selling industry. He's a Harvard pass out. He has done, I mean, plenty of research on direct selling and how growth can be achieved. And he says something which is very interesting in one of his books. He says every company has multiple products. हर कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि उन प्रोडक्ट से वो सक्सेसफुल हो. वो सक्सेसफुल कब होंगे, राइट? जब उनका जो लीड प्रोडक्ट है उसका एक कंपेलिंग स्टोरी होगा, right? Success boils down to understanding the lead product story that is going to get somebody interested, and then keeping an extreme focus on that product story. But how do you multiply it? You have to make it simple. The simpler and compelling your story is, the chances of success are more. So हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो उसका एक प्रोडक्ट स्टोरी होना चाहिए कि क्यों लोग वो प्रोडक्ट लें. कंपनी को उस प्रोडक्ट स्टोरी पे बहुत फोकस करना चाहिए और उसको इतने सिंपलिस्टिक तरीके से बताना चाहिए कि हर आदमी उस स्टोरी को समझे, उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो. एंड दैट इज व्हाट विल मेक द डिफरेंस. एंड देन वी लुक्ड एट where do we stand in terms of what has been said by Brett Blake. If you look at 4Life, we are the world leader. There's no one close to us when we talk about the transfer factor science. So do we have a product story? Do we have a compelling product story? Yes, it's very much there. And then let's look at, do we have a focus on that product story, right? And then you'll come to know that we get into these researches, we get into these papers. We are constantly trying to improve and innovate our product. And one example is the latest survey that has come out from NIS Labs USA, which says that 4Life Transfactor is clinically proven to activate your immune system within 2 hours. Now, which brand can have this kind of a claim? Right? So जब मैं ब्रेड ब्लेक की बात कर रहा था तो दूसरी चीज उन्होंने कहा था प्रोडक्ट स्टोरी के बाद कि क्या कंपनी का फोकस है उस प्रोडक्ट स्टोरी पे. एंड जब उसको हम कंपेयर करते हैं कि 4Life क्या करता है, हाँ हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट स्टोरी है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट हम कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि हम उसको और कैसे इनोवेट करें, हम आपको और कैसे ऐसे क्लेम्स दें, ऐसे कारण दें जो आप मार्केट में जाके बता सके इस प्रोडक्ट स्टोरी के बारे में. एंड जो रिसेंटली प्रोडक्ट जो रिसर्च हुआ है NIS लैब के द्वारा, जो बोलता है कि 4Life is clinically proven, right? So this is a research which says कि 2 घंटे के अंदर 4Life ट्रांसफर फैक्टर इम्पैक्ट करना शुरू करता है. But then the next thing that Brett Blake said is, how can you simplify this communication? And that is where, if you look at our creatives, if you look at the way we are trying to tell the world the benefits of transfer factor and why should everyone have it, right? So these are the creatives. This is our storyline, which makes the passing of information very, very simple. And I'll encourage all of you
बिकॉज अभी दुनिया बदल रही है, अभी लोगों को सिंपल चीजें चाहिए, ऐसी चीजें जो वो आसानी से समझ सके। सो वहां पर हमें ट्रांसफर फैक्टर को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, और कंपनी का हमेशा से ध्यान है कि हम कैसे बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से ट्रांसफर फैक्टर के बारे में बात कर सकें। सो मैं यहाँ पर दो क्रिएटिव शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर यूजिंग दिस व्हेन यू टॉक to your prospects, your consumers. And if you are, great. Thank you so much. If you're not, let us start doing it. Because we have a compelling story, we have the science behind us. But the question is, can we pass it on to the consumers in the most simplistic manner without making transfer factors a complex thing to consume? Right? So these are the initiatives that we'll be taking on products. But I think along with products, what is also important is how do we keep evolving our sales plan? We have a solid sales plan. The reason why we have so many successful people around the world, a lot of it can be attributed to our compensation plan because it has been built up in a nice manner. But चाहे हम कितने भी strong हों, I think every good person, every good leader, and every good company will always look for an opportunity to improve, an opportunity to change things to help them grow to a next level. And this is what we are doing. The first announcement that I'm trying to do now is uh, we have a we have a very strong loyalty program, right? We do our 65 to 70% business, and all of you do that in most of the cases during loyalty period. So that tells us कि हमारा loyalty program बहुत बहुत strong है। और इसका एक कंपोनेंट है कि जब आप 120 एलपी के प्रोडक्ट्स 120 एलपी का लॉयल्टी ऑर्डर देते हैं, यू गेट अ फ्री प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, राइट? But that free product is being decided by the corporate. So in some months you get a VMC, some months you get glucose, some months you get transfer factor plus, transfer factor advanced formula, but you don't have a choice. So the corporate decides कि आपको loyalty में क्या product दिया जाए. 1st of May we are changing that. अब हम बोल रहे हैं it is your loyalty award and you should have the choice to pick the product, right? So starting now, there will be no free product of the month. In its place, what will happen is every order that you place, you know that you get 15 loyalty points, 15% loyalty points, right? The maximum points you can have is 75. और अगर आप 800 LP का फास्ट स्टार्ट पैक लेते हैं तो उसमें 120 पॉइंट्स मिलते हैं इन लॉयल्टी. This remains as it is. So you'll keep on getting your 15% on all your orders. But if you place an order of 150 LP or more, you will get your 15%. And on top of that, you will get 35 bonus loyalty points. अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, so if you place an order of 150 LP, 15% of that is 22.5, right? So you get 22.5, or if I round it out, it will be 23 loyalty credit points in your account. But for every order which is 150 LP and up, so यहाँ पर आपको 23 LP मिला for that 15% credit, you also get 35 bonus points. So if you add that up, it is 58 loyalty credit points that you get on your 150 LP. If you take a fast start pack 400 LP का या 800 LP का, so instead of 35 bonus points, you get your 15% plus a bonus of 55 credit points, loyalty credits, in case you take a 400 LP pack, and 110 bonus loyalty points if you take a 800 LP fast start pack. So this bonus is only for one 400 LP pack and one 800 LP pack. You find it interesting that now you don't get a product which is being selected by the corporate. Now you have a choice
to redeem your product, right? Redeem that points for a choice of your product. So if I'm working on glucose, every month I have an opportunity to redeem those points for a glucose. If I'm working with Transfer Factor Plus, I have a choice every month to take Transfer Factor Plus as my product of the month. Right? I think this is a very, very important change. It's a very important change. And let us all start capitalizing on this starting today. Another thing which is happening is when you redeem your loyalty points, there are two charges. One is a loyalty fee, that is the taxes and other things. But for some products globally, in our case, we have two products, which is Riovida and NutraShake Vanilla. There is a surcharge that you have to pay. Henceforth, you don't have to pay that surcharge. But what we'll do is for the redemption, you need to pay few more LPs. And that is, you'll get to know when you're trying to redeem that product. So you still have to pay the redemption fee, but not any more surcharges. Okay, so let me translate this in Hindi for people who are comfortable with Hindi. So अभी आपको जब भी आप लॉयल्टी ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको 15% लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, राइट, ऑफ द एलपी वैल्यू. अभी भी वो होता रहेगा, राइट. आप मैक्सिमम 75 पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद दिस चेंज. अगर आप 800 एलपी का फास्ट स्टार्ट पैक लेते हैं तो आपको 120 एलपी 120 लॉयल्टी क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं ओनली फॉर फास्ट स्टार्ट पैक ऑफ 800 एलपी. बट अभी क्या चेंज होगा कि अगर आप 150 एलपी या उससे ज्यादा का लॉयल्टी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 15% तो मिलेगा ही, साथ में 35 आपको बोनस लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे. इसका मतलब है लेट्स से अगर आप 150 एलपी का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका 15% होता है 23 एलपी, उसको राउंड ऑफ करने के बाद. तो आपको वो 23 लॉयल्टी क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस क्योंकि आपने 150 एलपी का ऑर्डर प्लेस किया है आपको 35 बोनस क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे. तो 150 एलपी पे आपके पास जो टोटल बोनस पॉइंट्स होते हैं वो 58 हो जाते हैं. अगर आप लॉयल्टी ऑर्डर में 400 का स्टार्टर पैक या 800 एलपी का स्टार्टर पैक डालते हैं तो आपको वो 15% तो मिलेगा ही. सो फॉर एग्जांपल अगर आप 800 का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपको 120 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे ही, बट साथ में आपको 110 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. सो 800 एलपी पैक अगर आपका लॉयल्टी में है, लॉयल्टी ऑर्डर में है, तो आपको इन दोनों का जो सम है वो टोटल लॉयल्टी क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे. और आप इन लॉयल्टी पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं अपने चॉइस ऑफ प्रोडक्ट से, विच मीन्स अगर आप ग्लूकोज पे काम कर रहे हैं, अगर आप हर महीने चाहते हैं कि आप ट्रांसफर फैक्टर प्लस लें, तो अभी चॉइस आपके पास है. जब भी आप पॉइंट्स रिडीम करते हैं तो दो चीजें होती हैं, आप एक रिडेम्पशन फी पे करते हैं और एक लॉयल्टी सरचार्ज पे करते हैं. रिडेम्पशन फी आपको पे करते रहना पड़ेगा बिकॉज वो टैक्सेस और बाकी चीजें हैं. बट जहां तक सरचार्ज का सवाल है, अब आपको सरचार्ज में पैसे के बदले हम थोड़ा सा लॉयल्टी रिडेम्पशन पॉइंट्स उन प्रोडक्ट्स का बढ़ा देंगे. और हमारे देश में रियोवेदा और न्यूट्राशेक वनीला पर सरचार्ज है. सो आप उनको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप पैसों के बदले एडिशनल एलपी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं. Another change which is important is till now we are not your loyalty points are not expiring, so they are there forever. And in this process there are a lot of people who are not redeeming those points. They keep accumulating but they don't redeem. We want you to redeem your loyalty points and use that product to elevate your business to next level. And that is why what we're saying is any unutilized loyalty point will expire after 12 months. तो अभी तक लॉयल्टी पॉइंट्स एक्सपायर नहीं होते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि बहुत से लोग ये पॉइंट्स रिडीम नहीं करते. बट हम चाहते हैं कि आप इन पॉइंट्स को रिडीम करें, क्योंकि जब आप पॉइंट्स रिडीम करते हैं और वो प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, वो आपको मदद करता है आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, वो आपको एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी देता है. और इसलिए अब से 12 महीने के बाद आपका लॉयल्टी पॉइंट एक्सपायर हो जाएगा. सो इफ यू हैव एनी लॉयल्टी पॉइंट्स नाउ, ट्राई एंड
redeem it as soon as possible. And as is the current process for anybody who's coming new, they'll keep accumulating the loyalty points, but they can start redeeming after 60 days. So this is an important change that is happening globally. बट हम इंडिया में जब बात करते हैं तो इंडिया में बिजनेस थोड़ा अलग तरीके से होता है। अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक बार में बहुत ज्यादा ना हो, और क्या हम उसी पैसे से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। जब मैं फोर लाइफ का भी बिजनेस देखता हूं, आई एम श्योर आप लोगों का सबका एक वॉलेट साइज होता है। आज सुबह मैं उठा 1 मई को और मैंने बोला अच्छा इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास 5,000 रुपए हैं, और इन 5,000 रुपयों से मैं मैक्सिमम अर्निंग करना चाहता हूं। तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब मैं इस 5,000 रुपए का बार बार इस्तेमाल कर पाऊंगा एक ही महीने में। So what I'm going to announce is a very special change only for India. It has not been done anywhere in the world. It is only for India, and that change is when you place any order between 1st and 19 of the months, all those orders will have loyalty points. आप 1 तारीख से 19 तारीख तक, द कैलेंडर डेट्स 20 नहीं, सिर्फ 19, 1 तारीख से 19 तारीख तक अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, हर उस ऑर्डर में लॉयल्टी पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आप 50 एलपी का प्लेस करना चाहते हैं, 20 एलपी का प्लेस करना चाहते हैं, 10 एलपी का प्लेस करना चाहते हैं, 800 एलपी का प्लेस करना चाहते हैं, हर उस ऑर्डर में आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। और आप ये लॉयल्टी पॉइंट्स 1st से 19 तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। सो अगर मान लीजिए आज इस मीटिंग के बाद आप सब लोग जाते हैं और 50 एलपी का एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, उससे एक ट्रांसफर फैक्टर प्लस आता है जिसको आप रिटेल करते हैं और पैसा आपके पास वापस आता है, और आप 5 तारीख को एक बार फिर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं और आप उसको फिर रिटेल करते हैं। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट था शुरू में वो सिर्फ 50 एलपी प्रोडक्ट पे था, बट उससे आपने 2 बार 50 एलपी का पैसा घुमाया या पैसा रोटेट किया, और आपके टोटल 100 लॉयल्टी क्रेडिट पॉइंट्स हो गए। सो आप उसको एक्यूमुलेट करते रह सकते हैं 1st से 19th तारीख तक। And I think this will give you a lot of flexibility. People who do not have a lot of money to invest at one go, so you don't have bulk of a money to invest. What you can do is you can invest small, buy say first 100 LP, but then rotate that money multiple times. So इससे रिटेल करने की क्षमता और रिटेल से प्रॉफिटेबल होने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपके ये लॉयल्टी पॉइंट जब अक्रू होते रहते हैं और महीने के अंत में अगर पता चलेगा कि आपने 150 लॉयल्टी क्रेडिट पॉइंट्स जमा कर लिए हैं, तभी भी आपको 35 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। और ये सारे लॉयल्टी क्रेडिट पॉइंट्स अगले महीने की 6 तारीख तक, जैसे कि अभी आपके अकाउंट में आते हैं, ये तभी भी रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे। तो अभी आपको 35 बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आपने एक ही ऑर्डर प्लेस कर दिया 150 एलपी का, या आपने 50-50 एलपी के 3 ऑर्डर्स प्लेस किए, या आपने एक 100 का और एक 50 का ऑर्डर प्लेस किया। अगर टोटल 150 एलपी हो जाता है तो आपको 35 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। बट एक बात का जरूर ध्यान रखें, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हाट आई हैव सेड इज ऑल ऑर्डर्स प्लेस्ड बिटवीन 1st and 19th of the month will earn loyalty points. I have not said that they will be counted as loyalty orders, right? So these orders will be regular orders which will give you loyalty points, but these are not loyalty orders. And why do you need loyalty orders for? Typically two things. Whenever you have to redeem your loyalty points, you need loyalty orders. If you are tracking build a bonus, you need to have a single loyalty order of 100 LP or more, and those programs remain as it is. उस प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं है। The only change is that any order that you place between 1st and 19th will also give you 15% loyalty point. I hope this is clear. I hope this will give you more chances to earn more money.
Because on one hand, the MRP, the retail profit is going up, and on the other hand, you have got more opportunities to buy a product by rotating the same amount of investment that you have done in the beginning of the month. I hope you find this interesting. Please keep taking notes. If there are any questions, let's see how we handle them. Now, let's move to the next thing, and which is very, very interesting. Rapid rewards. So, rapid rewards are paid when you enroll somebody and he places his first order. On that first order, you get your 25% LP value as rapid rewards, which is sent to your account the very next day if you have a 100 LP order in place. So रैपिड रिवॉर्ड आपको मिलता है जब आप किसी को अपने नीचे ज्वाइन करते हैं और वो अपना पहला ऑर्डर प्लेस करता है, तो आपको 25% मिलता है और ये अगले दिन ही आपके बैंक में आ जाता है अगर आपका ऑलरेडी 100 पीवी हो चुका है तब तक. But what we have seen is people say that we need some time to make a group, to make a team, and to start earning from our structure. Because abhi kya hota hai, the moment you place your second order, that order, if it is from first level, fetches you 2%. And that 25% is now paid at second level business. So there is a big global change here. And that change, to me, is very, very important because as somebody joins new, now he has 3 months to keep getting the rapid rewards. So अभी आपको रैपिड रिवॉर्ड सिर्फ एक ऑर्डर पे नहीं मिलेगा, पहले 3 बोनस पीरियड में. तो अगर आपने अप्रैल में ज्वाइन किया है तो अप्रैल में या मई में ज्वाइन किया है तो मई, जून और जुलाई तक जो आपके पॉइंट्स हैं वो एज रैपिड्स आपको मिलते रहेंगे फ्रॉम द पर्सन हु हैज गॉट एनरोल्ड अंडर यू. So it's not one order now. It's all your orders for the first 3 months. Right? And accordingly, the next level will keep getting 12%, and then the next level will keep getting the 5% for the first 3 months. And beyond that, it's the regular compensation plan. Now, to make it simple, see, abhi kya hota hai? The first order, you get 25%, level 2 gets 12%, and level 3 gets 5%. But second order from the same person will get you only 2%. Because level 2 now pays you 25%. So अगर तब तक आपकी टीम बन गई है जो आपके लेवल 1 में है, उन्होंने किसी को एनरोल कर लिया है, तो वो आपको वापस 25% का टीम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा फ्यूचर ऑर्डर्स के लिए. बट गोइंग फॉरवर्ड, starting today, which is 1st May, rapid rewards now extends to all orders placed in the first 3 months. So पहले 3 बोनस पीरियड या पहले 3 महीने में सभी ऑर्डर जो प्लेस किए जाएंगे वो रैपिड्स में काउंट होंगे. सो फर्स्ट लेवल को 25%, लेवल 2 को 12 और लेवल 3 को 5% मिलता रहेगा. एंड आई थिंक बाय द टाइम दिस पीरियड इज ओवर, आपने जिनको रिक्रूट किया था अब उनके पास एक और टीम है जिससे जब ये ट्रांसफर होगा टीम कमीशंस में तो ऑलरेडी आपके पास वो पैसा जो आ रहा था वो आता रहेगा. सो देयर विल बी नो डिप इन इनकम. And this is paid daily if you meet the activation criteria. Now you look at it with what is changing in India also. So for India, अब आप multiple orders दे सकते हैं. उस multiple orders पे आपको loyalty points मिल रहे हैं जो आप redeem कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई आपकी टीम में किसी ने किसी को स्पॉन्सर किया और वो भी मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं तो आपको सिर्फ लॉयल्टी पॉइंट्स ही नहीं, उनके थ्रू आपको rapid rewards भी मिलते रहेंगे. So you have to see this in totality. Now let's move to something which is even more interesting. Because we have changed the criteria for loyalty orders in India, because there is a global change in rapid rewards, do you think now this 100 LP makes any sense? तो अभी इंडिया में क्या हुआ है कि आप मल्टीपल ऑर्डर दे सकते हैं और एक्टिवेट हो सकते हैं. अभी रैपिड रिवॉर्ड में चेंज हो गया है तो अभी भी क्या ये 100 LP होना चाहिए? बिकॉज ये मौका है हमें इसको ऊपर लेके जाने के लिए, ताकि जब अभी क्या होता है कि आपको टीम कमीशन अर्न करने के लिए कम से कम 100 LP चाहिए.
और तभी आपको टीम कमीशन मिलते हैं। बट अभी तो 100 LP करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो वी थॉट लेट अस चेंज दिस, बिकॉज अब आपके पास और मौके हैं, आप और ज्यादा LP कर सकते हैं। सो वी डिसाइडेड टू चेंज इट एंड दिस इज द चेंज। ओ ये 150 के बदले 50 है। And what you're seeing is correct actually, and this is done only for India, right? Now to earn commissions, the minimum LPs that you should have is 50 LP and not 100 LP, right? So अभी आपको टीम कमीशंस के लिए और रैपिड रिवॉर्ड्स के लिए 50 LP की सिर्फ जरूरत है। तो अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो इस मीटिंग के इमीडिएटली बाद में जाके एक 50 LP का ऑर्डर अपने ऐप से ऑर्डर कर दूंगा, ताकि मुझे मेरे जो कमीशन हैं, जो रैपिड्स हैं, वो मिलता रहे, और मेरे पास अब तो और भी मौका है लॉयल्टी पॉइंट्स कलेक्ट करने का। एंड इसका जो रियल इम्पैक्ट है इज फॉर द पीपल हु आर गेटिंग इनटू द बिजनेस, हु कैन नॉट डू लार्ज LPs, right? So a lot of people doing 50 LP and above now get into the bracket where they can start earning team commissions. They can start earning more money if they are seriously building their business. So this is a change which is specific to India, and this is where we can elevate our business to next level, because now you can get more and more people who participate in the business. Right? So we have announced three changes. One, we have been more flexible with loyalty credit points. There are multiple orders that you can place which can give you loyalty points. We have changed the rapid rewards from 1 order to 3 months. And now the activation criteria for getting the team commission and getting the rapids has also been reduced from 100 to LP. Do you need anything more to multiply your business? Because now, as leaders, as people who are seriously building the business, you can go out in the field and activate a lot more people, right? They can start placing loyalty order and picking up a product of their choice, which will help them get more profitable. So the whole idea of making these changes is more people doing for life business actively and earning more money from the plan. So this part was very critical. But then we also have a set of people who want to go up. If I talk about diamonds, diamonds want to become presidential. Diamonds want to be, presidentials want to go presidential elite and bronze and above. So our current criteria is, for if you have to be a presidential, you need to have 3 level LP as 10,000, and you need to have 2 qualified diamonds in your team for the month. We stand by this compensation plan. This is the compensation plan that makes us different from what is available in the market. This is the compensation plan that gives us that solidity, right? That gives us that firmness in the business, that if you're taking care of your 3 level people within your 3 level, there are more chances that you'll have a sustainable business. And this has been happening till now. So अभी अगर किसी को प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल एलीट या ब्रॉन्ज जाना है, so for example प्रेसिडेंशियल की रिक्वायरमेंट है, of course you need to have 8 people in front line placing orders, but 3 level में आपका 10,000 LP होना चाहिए और आपके पास 2 क्वालिफाइड डायमंड्स होने चाहिए उस मंथ में, डिफरेंट लेग्स में। नाउ हमारे लिए 3 level LP बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इन अ वे आपको इन्फ्लुएंस करता है या आपको इनवाइट करता है कि जो लोग आपके 3 लेवल्स में हैं, आप उनकी केयर करें, आप उनके बिजनेस को बनाने में मदद करें, ताकि आपका एक बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल रहे, वो लंबे पीरियड के लिए रहे, और आप ज्यादा पैसा कमा सकें। एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। ऐसा ही होता है अभी तक। बट पिछले कुछ दिनों में सिचुएशन चेंज हुई है इंडिया में, और वो चेंज ये है कि इफ यू लुक एट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, businesses are being consolidated. Now people are making a choice which company to work with. There are people who are deciding, who are in a stage
who need more support in terms of a compensation plan so that they can get uh, their people as a group. What is also happening is we have seen a lot of people changing ranks. So as people change ranks, they say कि it's slightly difficult to have a three-level LP of 10,000 for a new presidential. Can you make it simple for us? Right. So on one side, we know that three-level LP is very, very important, but because it gives you longevity, it solidifies your business. But on the other hand, we have a set of people who say, okay, can we have a way to qualify without getting 10,000 LPs in three level? And then we said, why can't we look at it only for India? So this is another change which is happening only for India. तो ये चेंज हो रहा है जो सिर्फ इंडिया के लिए है कि अब आपके पास एक नहीं, आपके पास दो तरीके हैं क्वालिफाई करने के लिए एट प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल एलीट एंड ब्रॉन्ज लेवल. सो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक बड़ा टीम है जो डेप्थ में बहुत चले गया है, सो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम्स आ रहे हैं बट थ्री लेवल में आपके पास बहुत प्रोडक्टिविटी नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ 10,000 आप 5,000 LPs कर सकते हैं थ्री लेवल में. So instead of 10,000, you can do 5,000 in your three-level LP and have an organization volume of 20,000, which is easy because now you have a big team. Similarly, for presidential elite, instead of 15,000 3LP, you need 7,500 in your three level. And if you have an organization volume of 25,000, you qualify as a presidential elite. And same goes for bronze, 10,000 and 35,000. Now, as you move to bronze elite, it is very important that you have a solid three level business, right? So you now have to move from 10,000 to 20,000 as you go up to bronze elite. And in terms of organization volume, the requirement is 50,000 from bronze elite, but you are now used to getting 35,000 at your bronze level. So moving from bronze to bronze elite and beyond will become relatively easier. So these three qualifications, we call them as sweet spots, right? If we have more qualifiers at presidential, presidential elite, and bronze, it has more of a pull impact because then you get more diamonds, then you get more builder elites, diamond elites in the business, and it has a push impact because once you become a bronze, you have the power to move to bronze elite and beyond. So even a gold needs a bronze. So we thought we make this change only for India. And it's not a change where you have to, I mean, you have to barter one way with the other way. This change means you have a choice. If you still want to qualify with the current criteria, please do that. But if you think the new criteria suits you for these three ranks, you have another option today. And I think this is another thing that will elevate our business to next level. That will help you multiply your business because now you can track these qualifications. Or if you are a leader at bronze elite and above level, you definitely can track your higher qualifications by helping people qualify at presidential, elite and bronze levels. तो हमें लगता है कि ये जो एक एडिशनल तरीका है क्वालिफाई करने का, ये जो चॉइस आपके पास है, ये डेफिनेटली आपकी मदद करेगा आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए. क्योंकि अभी आप चुन सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पहले तरीके से जो आज का तरीका है उससे क्वालिफाई करना है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे तरीके से क्वालिफाई करना है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं. And I think when we started off and started talking about loyalty order, rapid activation criteria, that was for people who are trying to get into our business, who want to choose for life and work with a world-class product. And now, as we move ahead to presidential and bronze, you have got a choice to qualify in a manner that you want. If you want to work in your depth, if you've already got a team and you're getting that entire team activated, you have more organization volumes. And now those organization volumes will work for you as you qualify for presidential, elite, and bronze levels. I hope you like this change.
Now our focus moves to something which has given me the confidence कि yes, we can multiply our business. And that is our focus on Fast Start. Now, this is a program which has been launched just 7 months back. And globally, we have more than 28,000 people participating in the program. We have paid more than 8 million in Fast Start bonuses. So ये एक प्रोग्राम है जो आपके बिजनेस को अगले लेवल तक ले जा सकता है। अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो आप अपने बिजनेस को डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम को अभी शुरू हुए सिर्फ 7 महीने हुए हैं और इन 7 महीनों में ग्लोबली करीब 28,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। $8 मिलियन तकरीबन 65-66 करोड़ रुपए ऑलरेडी फॉर लाइफ पे कर चुका है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है एज बोनसेस एंड कमीशंस फॉर फास्ट स्टार्ट बोनस। और ये 65-66 करोड़ रुपए जो हैं ये ओवर एंड अबव कॉम्पनसेशन प्लान है, ये एडिशनल इनकम है जो बाकी लोग कमा रहे हैं। फास्ट स्टार्ट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। Please build it into your plan, because as you recruit, as you enroll somebody with a fast start pack, you know that you have enrolled somebody who's trying to build a business. You know that you have enrolled somebody who's building, who has a dream for himself and who's ready to work for that. So जब भी आप फास्ट स्टार्ट में किसी को एनरोल करते हैं, आप एक बिजनेस बिल्डर को एनरोल कर रहे हैं जो आगे जाके अपना बिजनेस बहुत जल्दी खुद संभालने की कोशिश करेगा और आपको समय मिलेगा अपना जो इंडिविजुअल बिजनेस है, जो इस फास्ट स्टार्ट पार्टिसिपेंट के अलावा बिजनेस है, उसको और तेजी से ग्रो करने का। और तभी बिजनेस मल्टीप्लाई करता है। बिजनेस तब मल्टीप्लाई करता है जब आपके टीम में बहुत सारे बिजनेस बिल्डर्स होते हैं जो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, इंडिविजुअल ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। और जब ये सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तो आपका टीम का बिजनेस बढ़ेगा। So fast start is definitely one of our biggest focus that we have, right? And to help you do that, what we're doing is anybody who's joining from today as a fast start participant will get a fast start 90 guide. Right? This is a guide which is very rightly sized. इसका जो size है वो एक मोबाइल फोन के जैसा है। आप इसको अपने साथ रख सकते हैं, आप इसे कंटिन्यूसली सीख सकते हैं। राइट? हम लोग कितना मोबाइल फोन देखते हैं। सो कुछ दिनों के लिए जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या फास्ट स्टार्ट पे फोकस करना चाहते हैं, मोबाइल फोन के साइज की किताब पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे फास्ट स्टार्ट को अपना के हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। I mean, all of us are used to reading from the mobile screen. My request, for a few days, replace the screen with something which is as big as mobile phone but can take your business to next level, can help you multiply your business. Because in this book you'll see not only what this business is all about, you'll have daily actions which a new person needs to perform. You'll have a lot of advices. There is a QR code which you can scan and you can go to a digital book or a digital fast start 90 guide which has a lot of videos, right? And this is a global program. If you ask me, this is for the first time I have seen such a comprehensive training or a guidebook for somebody who's joining the business new. So for everybody who are participating in the Fast Start program starting today, they will get this guide free of cost with their Fast Start pack as it is home delivered to you. But we want to take the utility of this booklet a notch higher. What we have done is we have created a training module out of this booklet, right? Because it's important for all of us to learn, right? To learn how to drive our business and to learn it again, because so many things have changed today. So there is a lot of learning required. There's a lot of unlearning required. Because a lot of times we think we have been doing business for 15 years and this is the way business has to be done. But today, I think after this presentation, you'll feel that the game has changed. We have to move at a faster pace and there are new tools to do that. And if there are new tools,
We must start learning about the new tools. We must start implementing those tools and get results. And then what is important is we start teaching these tools to people who are in our team. सो आज के प्रेजेंटेशन के बाद कई बार क्या होता है, हम सब लोग 15-20 साल से बिजनेस में होते हैं और हमें लगता है कि बिजनेस इसी तरह से किया जाता है और हम ऐसे ही ग्रो करेंगे। बट आई एम श्योर आज के प्रेजेंटेशन के बाद आपको फील होगा कि बहुत सी चीजें बदल गई, और जब चीजें बदलती हैं तो हमें उन चीजों को दोबारा से सीखना पड़ता है। और जब भी हम दोबारा से सीखते हैं, हमें नई चीज़ों का पता चलता है, हमें एक नया जोश, एक नया एनर्जी आता है, और उस जोश, एनर्जी और नॉलेज को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम उसको फील्ड पे ले जाएँगे, तो डेफ़िनेटली हमें रिज़ल्ट्स मिलेगा। और एक बार जब हमें रिज़ल्ट्स मिलने लगते हैं, तो हमारा काम है कि हम इस लर्निंग को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें अपनी टीम में, और वो कैसे ग्रो करें। सो ये जो फास्ट आर्ट 90 बुकलेट लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप 90 डेज में, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फास्ट आर्ट 90, कि 90 डेज में कैसे एक आदमी जो फास्ट आर्ट पार्टिसिपेंट है, जिसने फास्ट आर्ट किट लिया है डे 0 को, विद इन 90 डेज वो कम से कम डायमंड तक कैसे अचीव कर सकता है। So please get a booklet for yourself whenever it is available on sales. For the time being, it is available only for people who are participating in the Fast Start program. But what you can do is you can attend one of these training programs, right? So we'll be launching this training program, and this is specifically for people who are Fast Start participants in May, June, and July. सो अगर आपकी टीम में फास्ट स्टार्ट पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मई में ज्वाइन किया है, जून में करेंगे या जुलाई में करेंगे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए है। और गोल क्या है? जैसे मैंने कहा था अभी कि गोल है कि विद इन 90 डेज हम कैसे अपने बिजनेस को एक डायमंड या डायमंड एलीट के लेवल पे ले जाएं। और ये प्रोग्राम डिलीवर कौन करेगा? आई थिंक द बेस्ट पीपल टू डिलीवर दिस प्रोग्राम इज द लीडर्स, बिकॉज आप फील्ड में हैं, या आपकी फील्ड है, या आपकी टीम है, आप जानते हैं कि किसको कैसे एड्रेस करना है। सो माय रिक्वेस्ट टू एनीबडी हु इज अ प्रेसिडेंशियल एंड अबव, please connect to your business managers and let them know that you want to give this training to your team, to your people who are joining as fast start participants from 1st May. तो अगर आप रेजिडेंशियल हैं या उससे ऊपर हैं और आप ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं, प्लीज अपने बिजनेस मैनेजर्स को बताएं, बिकॉज देन वी विल वर्क विद यू, विल एंश्योर दैट यू नो एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन डिलीवर इट फॉर योर टीम. As a corporate, we'll be also having these training sessions in offline mode. So your Fast Start participants can attend this training either through you or you can take support from us. And we are very, very focused on this program because stage 1 is when these people get into the program, they start working the plan which they have learned through Fast Start 90 and move to stage 2. Right? So happy to launch another educational workshop, which is Go Presidential. This is focused on people who are at Diamond and Diamond Elite, and what do they need to do to reach the next level? Because the game changes after Diamond Elite. Now you have to start working with your team. So there are new tricks to be learned. There is new competency that you need to build. There are new learnings that you need to have. So this will be a 2-night, 3 days regional workshop. So it will be a residential workshop conducted in a regional location. Who are the participants? Who can participate? So anybody who has qualified as a Diamond or Diamond Elite or above between May and July and was a part of stage 1. So उनको क्या करना है? जब उन्होंने ज्वाइन किया फास्ट स्टार्ट में, they have to undergo this training, number 1. Number 2, they have to qualify as a Diamond or Diamond Elite or above in the first 90 days. If they are doing these two things, they get this 2-night and 3 days regional workshop. So which will be education, but I think it will be a lot of interaction. It will be a lot of fun as well, and in a good regional location, right? And the goal here is to give those people who attend this workshop the new skills, the new competency that is required for
taking your business from a diamond level to a presidential bronze or above level. सो इसका जो गोल है, जो उम्मीद है, जो अपेक्षाएं हैं, वो ये है कि इस प्रोग्राम में हम वो स्किल्स और वो लर्निंग्स दे पाएंगे पार्टिसिपेंट्स को जो उनको मदद करेगा प्रेसिडेंशियल से आगे जाने में. And who will be the people who will conduct this program? So we will have this in participation. So we'll have corporate training team, we'll have our business managers, but at the same time, we'll have key expert speakers who are doing the business, who are on the field, who are growing, and who have maximum participants in the stage one. So जिनके भी maximum qualifiers होंगे, उन presidential और presidential elite को भी as an expert speaker बुलाया जाएगा इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए. सो इस प्रोग्राम में लोगों के पास मौका होगा इंटरेक्ट करने का कॉर्पोरेट टीम से, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स से, अपने पॉसिबली ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर्स से एंड अपने प्रेसिडेंशियल लीडर से जो उनको गाइड कर रहे हैं ग्रो करने के लिए. So this stage one gets launched today. So please focus on getting more and more people into the Fast Start 90 program because now we know that it is a very successful program which is driving our growth. Help them qualify as Diamond Elite in the first 90 days. Help them get into this presidential workshop. It's going to be an awesome workshop, and not only a workshop, but a good opportunity for the new people to engage with their leaders, with their fellow participants, and with the corporate. I hope you'll focus on this and let's start working on that because Fast Start has been the focus of company for last 7 months and it gets even better. What I'm going to share with you is I think this has never happened in Ford Life history. Right? What we have and what we are launching now, it was launched in convention, is a David Lisenby Fast Start Challenge. So this is a personal challenge by David Lisenby for the period May 1st to July 31st. And who can participate? People from associate to silver elite level can participate in this program. And let's see what is the program. There are 3 rewards for this, right? And remember that the program tenure is May 1st, so starting today till 31st July. The first prize is the top 7 affiliates from around the world will go to David Lisenby's personal ranch, which is in Wyoming, USA. They'll be invited with an all expense paid trip with one companion. So if you qualify, you can get one more person and spend some time at David Lisenby's ranch in USA. And of course, you'll get time to spend with him. And there are only 7 people. Out of these 7 people, 3 people will be from associate to diamond elite level, 2 people will be from diamond and diamond elite level, and 2 people will be from bronze to silver elite people. And globally, the people with maximum points. Now, there is a second opportunity. Second opportunity is the Ford Life world has been divided into 3 parts. One is the Americas, which has North America and South America. One is Europe, and one is Asia. We are part of the Asia part, the Asia section of this contest. And what we have to do is we have to ensure that within our region, so within Asia, we earn the highest point as a country. Because if we do that, then we will be honored to host David Lisenby in country. So then David Lisenby will travel to India and have a seminar with us. Can you imagine the impact in your business if you can participate and help? I mean, David Lisenby visit India and talk to the Indian audience. So what we have to do is we have to top the list of Asia and get David Lisenby into India and have a event with him. And it's very much possible because if I look at the global stats, India is, I'll say, in the top 7, 8 countries when it comes to number of fast start kits that we are selling. So definitely it is a possibility that we top the table for Asia and get David Lisenby into India. And मुझे लगता है
I feel that May to July, this becomes our priority one. That what can we do to get David Lisenby into India? Because if he comes in, definitely all your businesses will multiply. He's a person who's been respected a lot by everybody around the world. He's a person who's most passionate about Transfer Factor, and he's the best brand ambassador of our brand that we have. And the third incentive is if he visits India, the top 21 people who have maximum points. So in this top 21, seven people from associate to diamond elite, seven people from presidential elite level, and seven people who are at bronze, between bronze and silver elite level. They will have a special dinner with David Lisenby. सो आई थिंक मार्च से लेकर सॉरी मई से लेकर जुलाई तक, सो आज से लेकर जुलाई 31 तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है ये डेविड लेजनबी फास्ट स्टार्ट चैलेंज, जो खुद डेविड लेजनबी ने कन्वेंशन में अनाउंस किया था। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो फोर लाइफ अफिलिएट्स हैं जो फोर लाइफ का बिजनेस कर रहे हैं उनको चैलेंज किया है, बिकॉज फोर लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो अभी तक हमने लॉन्च किया है और हम डेफिनेटली उसको अगले लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये कॉन्टेस्ट क्या है। बहुत सिंपल कॉन्टेस्ट है। दुनिया के जो सात सबसे बड़े ऐसे लोग होंगे जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स अकोमुलेट करेंगे दुनिया भर में, ऐसे सात लोग, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको डेविड लेजनबी के साथ उनके पर्सनल रैंच जो वायोमिंग में है यूएसए में, वहां पर समय बिताने का। और सिर्फ आप नहीं, आपके साथ आपका एक कंपेनियन भी जाएगा। और इन सात लोगों में तीन लोग ऐसे होंगे जो एसोसिएट और डायमंड लेवल के एसोसिएट और डायमंड एलीट लेवल तक होंगे। दो लोग ऐसे होंगे जो प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल एलीट लेवल तक होंगे, और दो लोग ऐसे होंगे जो ब्रॉन्ज से सिल्वर एलीट लेवल तक होंगे। सो ग्लोबली एंड इंडिया से ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी और देश के पास अपॉर्चुनिटी है ये जीतने के लिए, बिकॉज हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं। हमारे पास फोर लाइफ वर्ल्ड के सबसे अच्छे लीडर्स में से हमारे पास है। सो अगर आप फोकस करते हैं आप डेफिनेटली ये रिवॉर्ड जीत सकते हैं। दूसरा रिवॉर्ड है कि फोर लाइफ वर्ल्ड को तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है वो अमेरिकाज है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसमें आते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो पूरा यूरोप है, और जो तीसरा पार्ट है वो एशिया है। हम लोग एशिया में आते हैं। तो एशिया में अगर हम वो देश होंगे जो सबसे ज्यादा फास्ट स्टार्ट पॉइंट्स अचीव करेगा, वहां पर डेविड लेजनबी स्वयं आएंगे। वो खुद आएंगे, वो ट्रैवल करेंगे और वो एक इन कंट्री इवेंट करेंगे। और क्या आप अंदाजा कर पा रहे हैं, अगर डेविड लेजनबी इंडिया ट्रैवल करते हैं और हमारी ऑडियंस के साथ बात करते हैं, सो आपके बिजनेस पे उसका क्या इम्पैक्ट करेगा? डेफिनेटली आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करेगा। तो मुझे लगता है मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम डेविड लेजनबी को इंडिया ला सकते हैं। और अगर वो इंडिया आते हैं तो जो टॉप 21 लोग होंगे विद मैक्सिमम पॉइंट्स, इन 21 में से टॉप 7 लोग जो एसोसिएट से डायमंड एलीट रैंक के बीच में होंगे, टॉप 7 प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल एलीट रैंक में, और टॉप 7 ब्रॉन्ज और सिल्वर एलीट के बीच में, उनके साथ डेविड एक स्पेशल डिनर करेंगे। एंड ये बहुत ही आई थिंक इट विल बी अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो 21 लोग हैं उसमें एक टेबल के ऊपर आपका भी नाम होगा। बिकॉज अगर ये होता है इसका ये मतलब है कि आपका बिजनेस मल्टीप्लाई कर रहा है। फास्ट स्टार्ट हमारा अभी तक के सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम्स में से रहा है। विद इन 7 मंथ्स 65 करोड़ से ज्यादा रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए फोर लाइफ द्वारा सिर्फ इसी प्रोग्राम के इंसेंटिव के लिए। सो डेफिनेटली ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। बट सवाल ये है कि क्या ये प्रोग्राम आपके लिए वर्क कर रहा है? इज दिस प्रोग्राम वर्किंग फॉर यू? एंड दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट? So let me just go back to where we started from. So we started with products being more profitable with now 20% retail margin and higher LP as we keep changing and implementing our pricing policy for this year. Then we moved to making loyalty points more accessible in terms of whenever you place any order between 1st and 19,
It is not a loyalty order, but you still get your points. And now you can redeem these points for a choice of your product. सो हमने लॉयल्टी प्रोग्राम को आसान बनाया है. अब आपके पास ज़्यादा मौके हैं लॉयल्टी पॉइंट्स गेन करने के लिए. पर ध्यान रखिएगा कि दो जगह पे लॉयल्टी ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है और वो भी होगी. एक, जब आप पॉइंट्स रिडीम करने जाते हैं, और दूसरा, जब आप बिल्डर बोनस के लिए 100 LP की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. नाउ मूविंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, जहाँ पे एक्टिवेशन कम हुआ. एक्टिवेशन के लिए अब 100 LP नहीं, अब 50 LP चाहिए. फिर हमने मूव किया और देखा कि हम क्वालिफिकेशंस जो प्रेसिडेंशियल लीड और ब्रॉन्ज लेवल पे हैं उनको कैसे आसान कर सकते हैं. फिर हमने फोकस किया फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है. और मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने फास्ट स्टार्ट चैलेंज की बात की है, आप सबका इंटरेस्ट तो आ गया होगा कि कैसे पॉइंट्स अर्न करेंगे इस फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम. I'm sure now you would like to know how to earn the fast start points. I think it's very simple, right? You have to do just two things between 1st May and 31st July. Focus on getting new fast start participants. So सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी. पहला, आप कितने फास्ट स्टार्ट पार्टिसिपेंट्स अपनी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरा, जब कोई फास्ट स्टार्ट से ज्वाइन करता है मई में फॉर एग्जांपल, तो जून और जुलाई में क्या वो 150 LP का लॉयल्टी ऑर्डर प्लेस कर पाएगा. बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो सही में बिजनेस बिल्डर है, क्योंकि वो अपने बिल्डर बोनस के लिए कोशिश कर रहा है, वो कंसिस्टेंट है, और वो ज्यादा पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहा है. और ये तीनों चीजें जरूरी है टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस बिल्डर. So if he's placing a 150 LP loyalty order, he's trying to signal you by three ways. One, he's focused on business. He's focusing on consistency. He's focusing on building a structure that gives him builder bonus, and he definitely wants more money from the plan. So these are the two focuses. So step one, help somebody join through a fast start program. Step two, for the next 2 months, he should place 150 LP order. So if somebody is joining in June, he places a 150 order in 150 LP loyalty order in the month of July. And then you can get some points. A point calculation is very simple. If you enroll somebody personally, right? If he's your personal enrollment and you are the enroller, you get 40 points. If he is being enrolled in your first 3 levels, then you get 20 points. So अगर वो आपका पर्सनल एनरोलमेंट है तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे. और अगर आपके फर्स्ट 3 लेवल में किसी ने उनको एनरोल किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे. सो जिसने एनरोल किया उसको 40 पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके ऊपर सभी को 3 लेवल तक 20 पॉइंट्स मिलेंगे. सिमिलरली, जब वो 150 LP का लॉयल्टी ऑर्डर प्लेस करेंगे लेट्स से जून में, और अगर वो आपके पर्सनल आप उनके एनरोलर हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेगा. अगर वो आपके 3 लेवल में है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेगा. अगर वो जुलाई में फिर से ऑर्डर प्लेस करेंगे लॉयल्टी 150 LP का, तो फिर से आपको 20 पॉइंट्स मिलेगा. और अगर वो आपके 3 लेवल में है तो वो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे. इट्स वेरी सिंपल. And you'll see that technology will help you understand where you stand, what is the leaderboard, how many points have you accumulated. So those things are being implemented. The first thing is, can we get somebody join in our business as a fast start participant? Let's start focusing on this. We have got a flexible kit to join with. We have got a 400 LP pack and we have got a 800 LP pack. So he can join and he can start placing orders of 400 LP pack or 800 LP pack to maintain the consistency. But minimum he has to pay 150, place 150 LP loyalty order. Now we have seen everything which is related to the foundation. We have seen what is good for everyone, what is good for people. At higher ranks, we have launched education program. Can we make it even better is the question, right? So let's see what is the next slide. Now, Great Escape for us is a very aspirational trip, right?
हम सब ग्रेट एस्केप अटेंड करना चाहते हैं बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर I mean, not only people from your country, but qualifiers from other Asian countries also join. And you get a chance to learn from them, you get a chance to interact with them. And of course, it's an all expense paid trip where you go to a destination and enjoy it. And it's available for everybody who's presidential and above. But till now, we did not have a date assigned to it, जो आप इस slide में देख रहे हैं. So you're looking at a date of May to December. So our Great Escape plan does not have a date. So whenever you qualify as a presidential first time, you have got 6 months in which you have to qualify presidential 2 more times and you earn this Great Escape. Same goes for other ranks. But there is a specific reason why we are mentioning this date. And that reason is very simple, that we want to elevate 2024. हम 2024 को बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए ये डेट्स यहाँ पर लिखे हैं, बिकॉज अदरवाइज हमारे ग्रेट एस्केप प्रोग्राम में डेट्स नहीं होता है. सो जब भी आप फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंशियल क्वालिफाई करते हैं, आपके पास अगले 6 महीने रहते हैं 2 बार और क्वालिफाई करने के लिए, और आप ग्रेट एस्केप पे क्वालिफाई कर जाते हैं और आप किसी भी एशियन कंट्री में ट्रैवल करते हैं जहाँ ना सिर्फ आप उस जगह को एंजॉय करते हैं, बट आपको मौका मिलता है बाकी एफिलिएट से जो बाकी एशियन कंट्रीज से आते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का और उनसे चीजें सीखने का कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं. मोस्ट कंसिस्टेंट प्रोग्राम, मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम, मोस्ट एस्पिरेशनल प्रोग्राम. तो हमारा ग्रेट एस्केप हमेशा से बहुत कंसिस्टेंट रहा है. मेरे ख्याल से सब लोग ग्रेट एस्केप अचीव करना चाहते हैं और बहुत अलग तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाते हैं जब आप ग्रेट एस्केप अटेंड करके वापस आते हैं. बट आई थिंक पहली बार आप देख रहे होंगे कि इसमें एक टाइम पीरियड लिखा हुआ है जो मई से दिसंबर तक है. स्टार्टिंग टुडे जो भी व्यक्ति मई 24 से दिसंबर 24 तक क्वालिफाई करेगा उसके लिए ये डेस्टिनेशन. हम कभी भी डेस्टिनेशन अनाउंस नहीं करते क्योंकि इंडिया है, इंडिया स्पेशल है, आप स्पेशल हैं. सो फॉर द फर्स्ट टाइम हम डेस्टिनेशन प्री अनाउंस कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन पीरियड प्री अनाउंस कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स सभी लोग क्वालिफाई करेंगे ग्रेट एस्केप के लिए, बट इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए इट विल बी ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. सो विल हैव लिमिटेड सीट्स और वही लोग जो उसके अंदर आएंगे उनको हम ये डेस्टिनेशन ऑफर करेंगे. सो कोशिश करिए कि आप कितनी जल्दी ग्रेट एस्केप क्वालिफाई कर सकते हैं और इस लिस्ट में अपना नाम डाल सकते हैं. सो जब मैं बोल रहा था तो मुझे लग रहा था आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि कौन सा देश है. सो मैं देश तो अनाउंस नहीं कर पाऊंगा अभी, बट ये अनाउंस कर पाऊंगा कि आप किन लोगों के साथ ट्रैवल करेंगे, राइट, किन और एफिलिएट्स के साथ ट्रैवल करेंगे. तो इस बार अगर आप मई से दिसंबर तक क्वालिफाई करते हैं, if you qualify between May and December 24, you get to travel with affiliates of Europe, which means that this great escape destination for people who qualify between May and December is Europe. And we'll come back to you with more details. But what is most important is this is a first come first serve basis, limited seats available. So try and qualify for Europe as soon as possible. Try and get your team members qualified because Great Escape is an awesome trip. And I think everybody in your team should experience what Great Escape is. And this time it's really special. I think for the first time we are going to Europe as a Great Escape destination. I hope you like the destination. I can't see your excitement on the screen, but I'm sure it's there. And this is what brings me to kind of the end of this presentation. And when I was looking at how do I elevate myself, how do I behave when so many things are changing, because now the business is evolving. So when we looked at evolution of business, who better than Charles Darwin to tell us how to survive when things evolve? And he's saying something which is very smart and very relevant. He says it is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one that is most responsive to change.
So जब हम ये एलिवेट प्रोग्राम कर रहे थे, हमें लगा कि ये बिजनेस इवॉल्व करेगा, ये फॉर लाइफ इंडिया के बिजनेस का इवोल्यूशन है। और जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इवोल्यूशन जब होता है तो कौन लोग सफल होते हैं। सो चार्ल्स डार्विन जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी, उनसे बड़ा आदमी तो नहीं है समझाने के लिए कि जब चीजें बदलती हैं तो कौन लोग सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। उन्होंने कहा वो ग्रो नहीं करते हैं जो अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं या जो सबसे स्ट्रांग होते हैं। वो ग्रो नहीं करते हैं जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हमें इस बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है और हमसे ज्यादा कौन जानता है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा वो लोग ग्रो करते हैं जो चेंज को समझते हैं और उस पर काम करते हैं। सो मेरी उम्मीद है कि ऑफ कोर्स ये प्रेजेंटेशन था जहां पर हमने करीब 1 घंटा 20 मिनट बात की है और समझा है कि ये चेंजेस क्या है, और समझा नहीं है और सुना है कि क्या चेंजेस है। बट नाउ इज द टाइम, आई एम श्योर यू हैव नोटेड डाउन योर पॉइंट्स, द पॉइंट्स which are of your interest. Go down to the business team, call up your business manager, call up Vijay, understand how you can take maximum advantage of these changes. Call up your uplines. They are the best people to help you understand how to build your business to next level. Because remember, we have chosen to grow this year. We have chosen to multiply our business this year. We have been growing, but we are not happy with that. We want to multiply. We don't want to add. And all these changes that have happened, I'm sure on the screen there are people who have been with us since 1998, 2008, when we launched in India, and 1998 when the company was launched. They have been hearing about For Life. Have you seen these many changes at one go being done in one country? And why is it happening? It is happening because everybody in For Life corporate, in For Life world, believes that if anyone can multiply the business the fastest, it is Indian people. Right? And I have a lot of trust in all of you. I have a lot of trust in my team, and I have a lot of trust in myself that I'll do everything that is required to make this plan a success. And to help you understand more on that, we are conducting the first year, I mean, the first series of these meetings. So we'll be in Dimapur on 3rd, Kohima 4th, 8th, I'm traveling to Varanasi, Hyderabad, Vijay will be there. 11th, we are in Coimbatore, 14th, Mumbai. Parallelly, Chennai is doing a meeting on 14th, and we are in Surat on 15th. So these are the dates. Please block them. Your business managers will come back to you as we close the locations, as we finalize the locations and time slots. Attend these meetings. Make your prospects come for these meetings. Make your team members come for this meeting and have a good session where you can clarify all your doubts. You can consolidate your dream, because when you have looked at this presentation, I am sure all of you have started believing that you have to multiply your business. But remember two things that I shared in the beginning. One is the choice that I have to be there. Second is to learning the discipline. So learning the nuts and bolts of the business. And I think these meetings that we are having at locations, they'll help you do that. Because once that happens, the question that I have for you is, are you ready to soar higher with For Life? For Life India is definitely going to soar higher. And we can do that only if your business soars higher with us. And we really want you to grow your business, multiply your business. And to do that, first, learn everything once again, because the game has changed. Start implementing. So I think the first day is today. I know that I'll start getting rapids when I have 50 LP, personal PV, right? I also know that Rapids now can be earned for 3 months and for all the orders. So, first thing that I have to do is I have to ensure that I start getting the Rapids directly into my bank the very next day. So, what do I have to do? I have to place my first 50 LP order today, so that any rapid reward that I qualify for starting tomorrow does not sit with For Life. It comes to my bank.
I mean, that's one example I have given you. कि हमने देखा है कि किस तरह से चेंजेस हुए हैं लॉयल्टी प्रोग्राम में, लॉयल्टी क्रेडिट पॉइंट्स में। लॉयल्टी प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है, लॉयल्टी क्रेडिट पॉइंट्स में। ठीक है, अभी अगर मैं पहला ऑर्डर डालता हूँ 50 LP का, तो मुझे लॉयल्टी क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा टीम कमीशन के लिए भी। और अगर कोई रैपिड रिवॉर्ड अर्न करता हूँ तो वो डायरेक्टली मेरे पास अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए क्या जरूरी है कि मैं आज अपना 50 LP ऑर्डर प्लेस करूं। एंड आज तो ऑफिस बंद है, आप कैसे प्लेस करेंगे? आप डेफिनेटली फॉर लाइफ ऐप यूज कर सकते हैं इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। सो वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नाउ हाउ वी कैन let people do the business 24/7. How can we empower our team that even when you are sleeping, somebody is placing an order in your team? You're earning a rapid reward, you're earning loyalty credits, you're earning team commissions. So, how do we learn to now broad base our business and implement that starting today? And not only that, the most critical part is we have to start teaching this. Right? So we have to start teaching this to our people so that the business grows. Right? So with that, I think I'll stop sharing and I'll come back to screen. So excited to launch all these initiatives. I think I've never had so much content, so much changes, so much upgrades to announce, and I feel very happy about it. I know that you'll have lot of questions, right? So first, I'll encourage you to go over the points that you have written down, and whenever you have questions, definitely you ask them, right? Because we have already spent about 1.5 hours, and that was the time that we said we'll have this meeting for, and we'll keep clarifying the questions. Vijay, I'll hand it over to you, just in case I have, in my excitement, missed any point or anything that you would like to talk differently. Thank you, sir. I know it's difficult to announce uh, these many announcements with that excitement, because I do these meetings regularly. I know that when there is so much to announce, how excited we are. So thank you so much. By the way, it was a wonderful meeting. I was noting down everything which you said, and we had many announcements. So I just would like to repeat few of those, if you allow me. So मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा कि कौन कौन सी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट वाज अबाउट द लॉयल्टी दैट वाज अनाउंस्ड इन कन्वेंशन। अब द बेस्ट पार्ट इज वी कैन चूज आवर प्रोडक्ट फॉर द लॉयल्टी। अब हम अपने हिसाब से लॉयल्टी का प्रोडक्ट चूज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपके पास 19 तारीख तक की डेट है, आप लॉयल्टी ऑर्डर प्लेस कीजिए और अपनी पसंद का प्रोडक्ट आप रिडीम कीजिए। आपके पास रिडम्पशन पॉइंट्स हैं, राइट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अब आप अपने रिडम्पशन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं और अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपायर होंगे। सो आपके पास 12 महीने का टाइम होगा। आप जल्दी से जल्दी रिडीम करना स्टार्ट कर दीजिए अपने रिडम्पशन पॉइंट्स को। स्टार्ट रिडीमिंग योर पॉइंट लॉयल्टी पॉइंट्स, अदरवाइज इट विल गेट एक्सपायर्ड। नाउ वी हैव टाइम ऑफ 12 months. The third announcement was that now all the orders which we place from 1st to 19th, we will get loyalty points on that. That is the wonderful announcement. Now the best part is you place your loyalty order, 150 LP ka loyalty order place kijiye, you retail that, and now keep on placing a small orders as you retail, right? उस पे भी loyalty points इकट्ठे कीजिए और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने बेनिफिट्स को बढ़ा सकते हैं, right? So this is a beautiful announcement. ये announcement, sir, I know that people used to ask us that we need a multiple order option. Now we have the multiple order option. छोटे छोटे orders के साथ भी we can get the benefits, right? But remember one thing which is और said, that हम विजय, हम सब we कुछ फ्री में डिलीवर करते हैं। हम yeah, सब फ्री में everything डिलीवर करते हैं। We everything is don't on have a free. service Yeah, charge. even if you are ordering a toothpaste or Shweka face wash, you are getting it delivered free of cost. मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए? You are getting the redemption loyalty points on that, you are getting the free delivery,
plus if you will complete the 150 points, आपको 35 bonus points भी मिल रहे हैं. That's the beauty of this announcement, right? But remember one thing, loyalty orders अलग हैं, ये orders अलग. For builder bonus, for redemption and for David Lisenby का जो competition है उसमें participate करने के लिए you need loyalty orders of 150 LP. So remember that these are the additional benefits which you are getting. So loyalty orders में जो benefits मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, उसके अलावा additional benefits मिल रहे हैं that you can place the multiple orders now. See, someone joins, right? I will always encourage कि अगर कोई business builder आ रहा है, कोई networker आ रहा है, तो उसको 400 LP से join कराइए. बट अगर कोई ऐसा आदमी आ रहा है जो ट्राई करना चाहता है, wants to try that, okay, I want to try, the best part, he can try with 50 LP or he can try with 100 LP. He'll get the loyalty points also. Once he gets the confidence in the same month, he can complete 150 LP, he'll get the bonus points also. Right, so that's a wonderful announcement, sir. Many congratulations to all the family members that now we have this, which we wanted for long. Then one thing which is very close to me, sir, you talked about that David Lisenby sir wants to come. We can have the chance to host him in our country. And I always remember when Akrish ji said that, when I go to stage और मैं जब झंडा लहराता हूँ मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है और उनको सुन के मुझे प्राउड फीलिंग होती है. सो आकृष जी और बाकी सारे लीडर्स को ये मेरी रिक्वेस्ट है, नाउ दिस इज द टाइम फॉर अस कि हम हमारे फाउंडर को, ओनर ऑफ द कंपनी को इंडिया में इनवाइट कर सकते हैं. बट फॉर दैट वी नीड ऑल ऑफ अस टू वर्क टुगेदर फॉर फास्ट स्टार्ट. राइट, फास्ट स्टार्ट कंपटीशन में हमें सबको दिल से पार्टिसिपेट करना है. दिस इज आवर चांस टू prove that. And see, there are around 10 to 13 announcements in this month, and जिसमें से 70% सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है. दिस शोज दैट कि यूएस ग्लोबल को कितना कॉन्फिडेंस है इंडिया टीम पे. राइट, अगर इतना कॉन्फिडेंस है, नाउ वी हैव टू प्रूव एज अ फैमिली मेंबर दैट वी have a chance to be in top 3 in US global markets, right? And this would be the best first step to invite David Lisenby sir in our country by doing maximum fast start, and that only can be done by you all. If we work as a family, we can do that. We can motivate our team to go for the fast start, then ask them to place the loyalty order 150 LP on both in both months, and you can earn maximum points, right? You understand the loyalty David Lisenby सर को होस्ट करने का प्रोग्राम, अगर नहीं तो हम हैं आपके लिए. सो we have Ranjit in East and Northeast, we have Rajesh in North and West, we have Shabri in South too, which has Hyderabad, and we have Venkat in South one, which has Chennai and Kerala. So हम सब available हैं आपके लिए to help you out, to handhold with these all announcement and how you can collaborate with your plans, your goals. The most important is your goal. What do you want to achieve in 2024? And उसको कैसे आप इसको in pieces को fit कर सकते हैं अपने goal में. For that we can help you out. Now we'll move to this Fast Start 90, which you said talked about. Said so we have these competition. You can visit to US and you can have experience of David Lisenby's personal ranch there, and you can stay there. You have that option also. For that, we are launching the Fast Start 90 workshop. Now, that's a wonderful workshop which focus on education. So, जो नए लोग आ रहे हैं, the people who want to grow fast with the Fast Start Pack, we have an entire training program for that. And from our family members, from you, there will be trainers you will guide them, who will handhold those new people, right? And we will reach out to you for that. So वो एक program जो launch किया, that is a wonderful program, and Presidential, who will be training the newcomers, they can also be part of co-presidential workshop. That is again a very good regional workshop जो 2 night और 3 day का होगा. रीजन वाइज होगा, आउट लोकेशन पे होगा. तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे आप एजुकेशन भी लेंगे, आप दूर रहेंगे अपनी कर्म भूमि से, और वहां पे आपको सीखने का मौका मिलेगा 2 nights 3 days में. तो वो एक वर्कशॉप बहुत अच्छा है वो प्रेसिडेंशियल का, राइट? सो वो, और मोर इंफॉर्मेशन विल गेट इट थ्रू योर बिजनेस मैनेजर. नाउ वन इंफॉर्मेशन ऑन 50 LP activation, bonus activation program. This, sir, I remember that when I was having a meeting with many leaders, they used to say, people are finding difficult to do 100 LP when they are joining new. Now, this is also asked by our family members that हमें एक option चाहिए जहाँ पे
People can, start with the small and then they can grow further. And now you have the option. अब आपके पास वो भी option है. They can start with 50 LP also, right? और उसमें भी मल्टीपल कर सकते हैं, उसमें भी they'll get the loyalty, or they can activate the bonus points also. But remember, this is for only those people who have a small pocket size, who want to start small, or rather I would say जिनको छोटा start करना है. But for us, always remember, builder bonus, redemption points, David Lisenby competition, in sub में loyalty program important है. We can't forget that. So your 150 loyalty is important. It's just these flexibilities are the for the people who can join you, and when you are increasing your team size, you can give them these options. So ये एक बेहतरीन announcement है. Yep, David Lisenby and the Great Escape. How can I forget that? So, Great Escape, Europe destination. I am more than excited. I don't have words to describe that, but I can see the smile when you were talking about the Great Escape. Europe, amazing. Being with the European distributors, European leaders, I think it's icing on the cake when you will be learning from the Europe market, how they are doing good. So that is one of the biggest region we have in Whole Life Global. And being with them, learning from them, it's a wonderful experience. So Europe is the destination for the Great Escape, but this time we have a time duration. You can qualify from May to December. I know there are many leaders who are planning the big ranks. There are leaders who have announced that they will go gold. There are leaders who have already announced that they will go silver elite and silver. I think that's a wonderful tool to motivate people under you who can qualify presidential, who can qualify bronze, and you can achieve your rank. I mean, how you can use that, completely up to you. But remember one thing, as a family, as a team, we are with you. We have Ranjit, Rajesh, Venkat, Shabri to help you out with all the announcement. Plus, we have our schedule ready. We have our training programs ready to talk about these announcements. We call it Elevate 2024, and we are completely prepared to elevate. Right, so thank you so much. I know that you have many questions, but we have already taken 1.5 hours. So we will reach out to you. We will talk to you proactively and we'll discuss with you on these announcements. So thank you so much. Have a wonderful 2024. I'll not say wonderful May, but have a wonderful 2024. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you for Bye. your All the participation. best. Thank you.